Hello all, very good evening and welcome to yet another session on commodities from ICICI Direct. So I welcome you all to this Commodities Thursday. And also I welcome you all from a very peaceful, flat equity trading session today. So let's see if there is anything interesting in the commodities market going ahead. As you all know already, many of you would be regularly attending these sessions, like this Commodity Insights, Trends and Forecast series. This is every fortnightly series. So every alternate Thursdays, you'll see this series, and we are on the 8th session today of the series. On the other Thursdays, you will be seeing Ask Us Anything on Commodities sessions, or maybe some different sessions also, all with respect to commodities. So I request you all to constantly keep attending these commodity sessions and parallelly improve your knowledge portfolio also, diversify your knowledge portfolio also into the commodities product. So today, let's quickly enter into the session. I'll share my screen. So this is the 8th session, Commodities, Insights, Trends and Forecast. I'm Arvind, Product Manager for Commodity Derivatives at ICICI Direct. And we also have with us Mr. Anup Sahu. He's the Research Analyst for Commodities, a dedicated Research Analyst for Commodities at ICICI Direct. Welcome, Anup. So going ahead, there are like three different things that we'll be covering in this series or in these sessions. One is the insights from the past 2 weeks, what had actually happened, what are the fundamentals and news from all over the world with respect to commodities market, or the news that would impact the commodities prices. So that we will discuss, and then we will also discuss the current trends in the prices of various or the major commodities we speak about. And then we will also discuss what are the forecast for the next 2 weeks, what are the price levels of different commodities. Do we have bullish or bearish views on any commodities going ahead in the next 2 weeks? So that's how the this webinar or this series is structured. Parallelly, I would ask you all to please put your questions in the chat box. तो जो भी क्वेरीज है हम जैसे जैसे डिस्कस करेंगे अलग अलग कमोडिटीज के बारे में हम टेकअप करेंगे we will try and explain the answers parallelly or at the end. So the agenda will be like, we will first discuss the fundamentals, and while we are discussing fundamentals against different commodities, we will also parallelly look at the price levels and the technicals also. So when I say major commodities, why do I call some major commodities? That based on the Indian commodities market, that is, which is primarily MCX, जो ज़्यादा volume commodities trading, almost 97 to 98% जो MCX में हो रहा है. So वहाँ पे based on volumes of trading or of the trades happening in different commodities, I would say ज़्यादा the major commodities would be in bullion, energy and base metals. Like बुलियन में गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, एनर्जी में क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया, बेस मेटल्स में कुछ कॉपर, एल्यूमिनियम, and to some extent zinc and lead also. So these are the primary commodities that we'll be discussing mostly about. But if you still have any more queries about anything else, please put it in the chat box and parallelly also take up karenge and we'll try and answer them. So going ahead, first if we look at bullion, what as I discussed, bullion, energy and base metals, कुछ major commodities discuss करेंगे. So bullion में if you look at, you can see gold has been hitting all-time highs recently, almost every day. So आज all-time high में hit हुआ था at around $29.55 per ounce. That's gold, and for silver, the highest was at around $33.09 when I last checked. So why this highs in gold and silver? हमने देखे थे जब when Trump was elected, when the US presidential election results came, we saw gold and silver just deep diving to very lower levels. That was because of the inflationary policy fears that we expected that Trump would come up with. So because of that, the gold and silver prices have gone down, hoping that Fed will have the interest rates higher only. So that was the reason. But going ahead, once Trump assumed office in January, he started coming out with tariffs, lots of tariffs. He had been slapping tariffs on so many countries, various products, a lot of exports. So we'll just quickly look at what are all those tariffs that Trump had been discussing since he assumed office. So this is a small list of what all tariffs Trump had discussed till now. So there is this 10% on Chinese goods everyone aware of, and this had been already implemented on 4th of February. Against that,
there was a retaliation from Chinese also of around 10 and 15% tariffs on the US imports of about $21 billion worth US imports. So this was implemented on Feb 10th. So on Feb 4th, Chinese goods के ऊपर 10% लगाया गया था. Then after that on Feb 10th, 10-15% US goods पे भी China had charged tariffs. So that's what. But yet there are talks that there will be a trade policy discussion between US and China in the coming weeks. So we can wait and see what would be discussed in those meetings. Then there had also been a 25% tariff on Mexican goods. And a retaliatory tariff was also indicated by the Mexican president, but we are yet to know how much will be actually charged. But this is supposed to be implemented on March 4th on the Mexican goods. Simultaneously, 25% tariffs on Canadian goods were also imposed, only on the non-energy goods. This will also be implemented on March 4th. On the energy goods, there will be a 10% tariffs. So retaliatory tariff from Trudeau also came in of around 25% on the US imports again. Other than that, there has been a 25% import on auto imports. That is both motor vehicles and motor vehicle parts and all those things. Whatever is getting imported into US will see a 25% tariff. This will be implemented in April, on 2nd of April. Then there is a 25% or higher tariff suggested on semiconductors and computer chips. A 25% on drugs and pharmaceuticals, a 25% on steel and aluminium, which will be implemented in the month of March, 12th March. And very recently, Trump also signaled tariffs on lumber, that type of like processed goods, lumber and other forest products, on which we still are not clear about the exact figure. So other than all these different types of tariffs that Trump had been talking about, there has also been reciprocal tariffs on all the applicable countries. So what is this reciprocal tariffs? Till now, there are many different countries who already have tariffs on US imports. So whatever for let's say if India has a 10% tariff on, let's say, around $5 billion of US imports. So US will impose reciprocal tariffs on the same amount of imports from India. Right. So that is how it is called reciprocal tariffs. So whatever countries that are already charging tariffs on the US imports, so US will charge same amount of tariffs on those reciprocating countries also. So that's the different types of tariffs and on different goods that Trump had been discussing till now. Just a quick run through for you that. Other than that, yesterday from the Fed's FOMC meeting, we saw hawkish comments. So going ahead, looking at all these number of tariffs, one thing that is happening is increasing the demand for safe haven assets, that is gold and silver. So that is also going up. On the other hand, because of these tariffs, it is feared that the imports into the US country might go down a little bit. That is, the selling of dollars would come down. That is also pushing up dollar levels. Dollar index is also going up. So you can see such a scenario where dollar index is also going up, and also gold and silver prices going up. But simultaneously, we are still having the inflationary fears and fears of trade wars also, with which Fed is still on hawkish stance and is not yet reducing any Fed interest rate. But yeah, but Anup, do you have any more points to add on this? Yeah, gold and silver, particularly if you see, most of the factors are positive for now. Just like Arvind has mentioned, safe haven buying is one of the major reasons because of which we saw a good rally in gold compared to silver. And even the gold holdings, uh, the ETF holdings, it has been increasing. Even last month numbers that came, it shows the inflow in the ETFs from European nations. Okay, so these are all the factors that has been supporting prices. Even the Chinese central bank, they are also increasing their holdings. One more thing you would say, if you left out US, other major central banks, they are even reducing their rates. Okay, so this month also Bank of England has reduced, and this Bank of Australia has reduced. So there are
most major banks are reducing their rates. So that is going to be a positive factor for the bullions. Okay. And apart from that, if I just want to add, uh, simply if we'll go from the data point of view, if anybody is who's tracking the option charts of international comex gold, you can say, okay, if you look, so the level of it is the call strikes are every week on week it's decreasing. You can say that earlier it was near the call concentration was there at near around 2900, but it has now moved towards the 3000 mark. So there are shorts which are being covered. Okay. And even if you will see the uh, CFTC net positions, okay, in that also you can see it is also already increasing. Only last week we saw some liquidation because last Friday we some correction in gold prices. But I think this week also, if you'll see, it will be again building up. So major factors are supporting. Agar if you want to go through the charts, okay, if you want to go through the charts, let's see how it is right now. Yeah, also try to viewers request थोड़ा हिंदी में भी ऐड करेंगे तो Okay. they'll be comfortable. ओके, Yeah. या वी विल कंटिन्यू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सी अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मोस्ट सेंट्रल बैंक्स ने रेट कट किया है। ओके, आगे भी रेट कट होने वाले हैं एंड ओनली यूएस की तरफ से रेट कट होना अभी चांसेस कम हो गए। जो हम लोग लास्ट ईयर देख रहे थे कि 50 बेसिस कट होने वाला है, अभी ये 25 बेसिस पॉइंट पे आ गया है बिकॉज यूएस में इन्फ्लेशन है थोड़े बढ़ के आए हैं। 6 महीने से धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जॉब नंबर्स भी अच्छे हैं, एक जो भी इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट अभी रेट कट जो होने के चांसेस है इन यूएस वो थोड़े कम हो गए हैं। ओके। एंड बाकी आप अगर चार्ट्स के देखेंगे, आप देख सकते हैं दिस ये जो है ये दिस इज अ चार्ट ऑफ गोल्ड एंड इट इज इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड एंड सी ये वीकली चार्ट है और कंटिन्यूअसली ये 8वां हफ्ता है जो कि तेजी में है। ओके, so now 2950 has already moved, like it has breached 2950. The next major resistance comes are near around 3000 level. ओके, बट एज पर जो ये जो कैलकुलेशन है मैंने आई थिंक आपको पिछला टाइम भी बताया था, जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, जो रेंज ब्रेकआउट भी आप मान सकते हो, उसके हिसाब से रेंज आ रहा है, जो टारगेट लेवल आ रहा है $3050 के आसपास आ रहा है अभी के लिए। मैं बोल रहा हूँ 3000, ये जो देखिए 2790 और 2536, ये जो रेंज का जब अगर आप ब्रेकआउट देखेंगे तो 3050 तक के आसपास आ रहा है। सो मेरे हिसाब से ट्रेंड अभी भी बुलिश है एंड आप वीकली चार्ट्स में भी आप देखेंगे तो अभी भी ओवरबॉट सिनेरियो में नहीं गया है। अगर 80 के आसपास आरएसआई आएगा तो हम सोचेंगे कि ओवरबॉट हुआ है, बट स्टिल देयर इज सम स्पेस। ओके, एंड फंडामेंटल फैक्टर्स आप देखेंगे तो मोस्टली पॉजिटिव ही है, सपोर्टिव कर रहे हैं प्राइसेस को। सो आई वुड बी स्टिल सेइंग कि अभी भी ऊपर का है जगह। सो करेक्शन होगा तो बाय करके रखिए, दैट विल बी द सजेशन। अगर गोल्ड प्राइस Okay. अगर एमसीएक्स के लेवल्स का अगर हम बात करेंगे, देखिए अपने यहाँ पे तो इट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग न्यू हाइस। ओके, एंड रुपी भी हमारे यहाँ पे वीक हो गया है बिकॉज ऑफ दैट हियर हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही प्राइसेस में तेजी देख लिया है ऑलरेडी इन लास्ट 2 मंथ्स। इफ यू विल सी नाउ, आप देखेंगे ये डेली चार्ट्स है तो 84,500, 84,500, 84,400 अभी के लिए दीज आर मेजर सपोर्ट लेवल्स है। दीज लेवल्स अभी जब तक नहीं ब्रेक होता है तब तक वी कैन एक्सपेक्ट थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए। ओके, आप सिंपली चार्ट्स देखेंगे ना तो यू कैन सी एवरी डे लास्ट 3 डेज से इट इज मेकिंग न्यू हाइस एंड जो एवरी डे के लोस है इट हैज बीन सपोर्टिंग, कुछ खराबी नहीं रही है मार्केट्स में। सो दैट्स व्हाई सेल करने से पहले आई वुड से जस्ट थोड़ा कॉशियस रहिए। अगर जो किसको थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सो दे शुड keep a stop loss below 84,400. Okay, so that is the view for the
You can say that for this week or maybe in a 5 to 10 days point of view. Okay, Anup, मेरा क्वेश्चन है, I'm not a Yeah. technical guy, so मुझे levels तो नहीं पता, but I'm Okay. considering $3,000 to be a psychological Yes. resistance level. तो वहां पे हम सेल कर सकते हैं क्या? I would 3000 not level? say, see, we cannot say that this is the top. Okay. देयर में भी करेक्शन, छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है 3000 पे, या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि 3000 लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, अगर आप ऑप्शन चार्ट्स देखेंगे ना, तो जो गोल्ड के 3000 के लेवल्स पे ना ओआई अभी सबसे ज्यादा है। यस्टरडे समथिंग अराउंड 8500 लॉट्स कुछ थे। ओके, एंड लास्ट वीक देखेंगे वो थोड़ा कम था, बट ये वीक थोड़ा और बढ़ गया है। सो जो 3000 का मार्क है वो साइकोलॉजिकल है, नो डाउट। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप Okay. सोच सकते हो को आ सकता है। यस। Okay, because also हमारा yearly report में we are given 85,000 for gold, right? यस। Of course, there was a depreciation in rupees also. So, यस। but what would be the revised levels now? हम कितना for this calendar year हम कितना लेके जा सकते हैं? Just a second. See, technically, if you'll ask, 3000 and 3050 is the one of the initial levels for me. Okay. अगर 3000 या 3050 के ऊपर, ये 3000 या 3050 के ऊपर भी सस्टेन होता है ये, then 1 second, I just have to check. अभी I think Yeah. Meanwhile, audience को अगर okay, yearly report देखना है, you 1 can see in the second. description below also. 1 second, I have just okay. हाँ, so 30,50 अगर 3050 के ऊपर ब्रेक होता है, देन 3220 के लेवल्स के आसपास, ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 3300 तक जाना चाहिए। 3300 ब्रॉडली आप मान के चल सकते हो आप, ये ओवरऑल टारगेट्स अभी के लिए होने चाहिए। 3300, right? Okay. यस यस यस। Understood. ठीक है. Can we take silver also? Silver chart we Yeah, just let's see silver charts. Yeah, Saranaji, after bullion we will look at we'll quickly look at natural gas also. We'll take up your query. This is international silver charts. So last time I think we have discussed कि 30 to 60 एक रेजिस्टेंस लेवल्स था, जो कि आई थिंक हमने लास्ट फ्राइडे को देखा कि इट हैज ब्रीच्ड बट सस्टेन नहीं हुआ है आज, लेकिन $33 के ऊपर चल रहा है। ओके, सो अगर हम देखेंगे तो फिलहाल के लिए तो मैं बोलूंगा $35 ही मान के चलिए। $35 ऊपर में, अगर 35 लेवल्स ब्रेक होते हैं ऊपर में, तो फिर से हम इसमें और तेजी देखेंगे। लेवल्स आई वुड जस्ट गिव यू जस्ट अ सेकेंड। 35 डॉलर आप मान के चलिए फिलहाल के लिए। ओके, एंड इसके ऊपर ये विल कम अराउंड या 35 के ऊपर, तो मेरे हिसाब से आपको दिखना चाहिए। Okay. जस्ट अ सेकंड। 35 levels resistance. या also. 38 के आसपास है। 35 is a major resistance. Beyond that, 37 to 30, 3750 to 38 levels आने चाहिए। Okay. Yeah. So currently both gold and silver, bullion overall we are seeing Yes. bullish only. Yes. बिफोर दैट सी, अगर ये जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि
$3,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है इन इंटरनेशनल गोल्ड. सेम वे सिल्वर में नियर अराउंड 35 एक सेम साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा. अगर 35 क्रॉस होता है, ओके, तो वहां पे भी वैसे ही $3,000 क्रॉस हो जाएगा फिर. एंड फिर से वो जो मोमेंटम तेजी का है दैट विल कंटिन्यू. Okay, after 35 we can still yeah, say it bigger can go momentum. till, yes 37.8, 38. yeah, 37.8 near around 38 के आसपास भी it can go. Okay, so हमारे एक व्यूअर है, he is having a query on natural gas. Okay. मैं read out कर लेता हूँ. Regarding natural gas, this month forecast was 274 to 304 as per Yes. Anup's video on 6th. So, but Yes. but unexpected rally, natural gas moved to 396 today. So, what is the news? And he also seems to have a position. So, quickly बताओ बोल रहे. Okay, even I think last Thursday inventory numbers are there, so I just mentioned के अगर आज के दिन में करेक्शन नहीं होता है then you should exit. Okay, and 304 जैसे ही मूव आउट हुआ है it has been like न्यू हाई के आसपास चला गया है. बट अभी देखिए व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज लाइक यूएस में विंटर्स का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से जो एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी है नेचुरल गैस की, वो कम हो गई है. ओके, एंड विंटर्स ज्यादा है तो डेफिनेटली डिमांड्स भी है. इवन एक्सपोर्ट नंबर्स भी अच्छे आ गए हैं. सो सब चीजें पॉजिटिव हो गए हैं. एंड लास्ट 3-4 हफ्ते से इन्वेंट्री में ड्रॉडाउन है. सो सब चीजें पॉजिटिव है. उसकी वजह से रैली तो हमने देख लिया, बट आई वुड से ये रैली टिकेगा कि नहीं टिकेगा, दैट इज द क्वेश्चन मार्क. आज भी इन्वेंटरी नंबर्स हैं, आज भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लगभग 200 समथिंग बीसीएफ के आसपास जो है ड्रॉडाउन ही होने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है. ओके, बट एक चीज है, ये विंटर जो है यूएस में टिल दे आर एक्सपेक्टिंग 26 फरवरी तक ये विंटर्स का जो कोल्ड वेदर का फोरकास्ट है तब तक रहेगा. उसके बाद धीरे धीरे इट विल सबसे यानी थोड़ा कम होता जाएगा टेम्परेचर. ओके, सो आई वुड से कि ये जो तेजी है मेरे हिसाब से 400 तक ही आई वुड से एक लेवल है, 400 के आसपास एमसीएक्स में, वहां तक ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो ये एक्सपायरी तक हम ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स मैं सोच रहा हूँ कि वहां तक ही आना चाहिए. 400 के ऊपर आई थिंक डिफिकल्ट हो जाएगा इसको टिकने के लिए. Yeah, I think primary factor is the Yes. colder weather expectations. जो Yes. So because of that, 2-year high prices reach हुए. But yeah, so since that being the primary factor, maybe this month end that we can see this rally. But as you said, maybe not more than 400. Yes. Not more than 400. आज भी देखिए कि ऑलमोस्ट 390 से 360 तक आ गया है, एकदम शार्प करेक्शन आया है. सो आज इन्वेंटरी नंबर्स आई वुड से फिर से वी जस्ट हैव टू मॉनिटर. अगर ये फिर से करेक्शन होता है 360 के नीचे ऐसा बंद होता है, या फिर कल थोड़ा बहुत हम करेक्शन देखेंगे, तो फिर से जो मेजर यू कैन से दैट जो तेजी का फेज है वो ओवर हो जाएगा, यानी थोड़ा करेक्शन फिर से चालू हो जाएगा इसमें. Okay, so is it suggested to hold now if anyone has a sell position? See, अभी I think we have can we just have expiry कब है अभी इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में है उनका पोजीशन जो है या फ्यूचर है. And if you want the answer in English. Okay, so I would recommend to just see natural gas. If I'll give an stop loss also now, that will be very difficult because the volatility is so much. If you are having a short, then I would say today's high must be your stop loss. Okay, any correction towards 345 would be like healthy correction for like 1 or 2 day point of view. 345, okay, even 340, I would say just wait for today's inventory number. Okay, and maintain. If you want to keep a short stop loss, then I would recommend you should keep a stop of
like 374. This is a very short term or intraday point of view kind of stop loss. If you want to put it, then keep that as your stop loss. Okay, or I could say one other way to look at around this week, we saw a good rally, healthy rally, like from 300 to 380, 390 levels. Okay, so maybe as we are moving towards the expiry week, then we can see some profit taking also. Okay, but I would say uh, trade with the stop losses in this commodity. This is highly volatility. Okay, even stops will hit and you later on you will get your price. Okay, these are very high volatility commodity. Intraday point of view or for 1 or 2 day point of view, I would say 340, 345 will be the lower range and higher range will be near around 390. This will be the range. If prices goes below 345 or 340, then we can expect good correction, good or healthy correction. 345, 340 will be the range. It's a very crucial range. If it holds, then again we can say some recovery from here on. Okay, and what would be suggested for tomorrow's expiry? कल तक कैसे hold कर सकते हैं? ये आई थिंक ऑप्शन की एक्सपायरी कल तक है, कल है क्या? या ओके 21st. ओके, सो मेरे हिसाब से देखिए आज अगर करेक्शन आता है तो यू शुड आपके इफ यू हैव शॉर्ट पोजीशन, इफ देयर इज अ करेक्शन टुवर्ड्स 340 345, देन आई वुड से एग्जिट इट. इफ it doesn't come, then also I would say you should square off. Okay. Yeah. Yeah, I hope Sarananji took the answer. If you still have any query, please put in the chat box. Okay, so parallelly, we'll also look at some points with respect to crude and natural gas. बस मेरा screen में एक बार दिखा देता हूँ. I just Yeah, that's okay. So energy may you can see there the last 2 days there was some positivity in the crude oil prices. There was a short-term supply concerns in crude oil. जो रशिया से थोड़ा export थे, they were slightly disrupted by some Ukrainian attacks. So there was some short-term supply concern in crude oil. So other than that, in general, there is a constant build in the क्रूड ऑयल इन्वेंटरी लेवल्स. दैट इज एक बार मैं ये क्रूड ऑयल का पेज में दिखा देता हूँ. सो इनफैक्ट आज क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डेटा भी आने वाला है. सो यू कैन चेक इट इन एनी इकोनॉमिक कैलेंडर. इफ यू सी हियर दैट द लास्ट few weeks, in the last few, you can see since January 2nd, since the month of Jan, you can constantly see there is stock buildup or stock pile up, or there has been less drawdown in crude oil inventory than expected. So since 7 to 8 weeks, there has been a stock pile up in crude oil inventory levels. So that is one reason crude oil is moving low since many days. So ये chart है. So this is since beginning of January, since mid-January, ऐसा हो रहा है, except for the last 2 days, right? So that's with respect to crude oil. So and also there is one OPEC Plus's delay in production rise for the month of April. So in the month of January, मुझे भी याद है we discussed no OPEC Plus countries that delayed the production rise from December to the second quarter of 2025, that is to April. But whatever production rise was expected in the month of April is also being speculated कि वो फिर से आगे के लिए change हो जाएगा. So there is still the speculation that there may not be a production rise in the month of April also. But you can see the prices are already falling down, the crude oil and at this point, obviously, even they would not be comfortable in increasing the production, right? So yeah, we need to look at this also. Yeah, आगे production rise April में भी रहेगा or if it go ahead again. But yeah, and then as we discussed, extreme cold weather in US also pushed natural gas prices to the 2 year high. So Anup might give you technical price levels in every call, but there are also major fundamental factors like this, which will increase the volatility at any time that we would not expect. So based on that's why both fundamental news points, fundamental data points, जो आपको economic calendar से मिल जाएंगे या from other news sections you'd get, along with the technical points, it will be helpful for you to take your trade decisions.
Yeah, no. You can take ahead crude oil cup chart. Okay, just a second. But considering the constant buildup in US crude oil inventory levels, it can maybe we should still be bearish on Anup. Sorry, still bearish on Yeah, crude. crude. Okay, crude oil. See, I think $70 it is holding since last uh 3-4 sessions, and I think last week also I had mentioned $70 पे जो put level strikes है वहां पे open interest there is ज़्यादा है. Okay, the OI level is strong, and week on week if you'll compare last week जो expiry था उसके बाद 70 से put base था that has been moved towards 68. Okay, similarly the call base जो open interest है that has been still there at 75 and 73. So अगर आप देखेंगे चार्ट्स में भी 70 और 73 के बीच में ही मूव हो रहा है लास्ट 4-5 दिन से. ओके, सो यहाँ पे भी मैं सेम चीजें बोलूंगा कि अगर हमने 6400 के ऊपर लेवल्स नहीं गए हैं सेक्स में, तो 6100 और 6400 के बीच में ही कंसोलिडेशन होगा. ओके, कुछ ज्यादा और अभी के लिए क्लैरिटी नहीं, बिकॉज हमने बोले 6900 या फिर इंटरनेशनल में ऑलमोस्ट $80 से $70 के आसपास एक फॉल देख लिया है. उसके बाद दिस इज अ फेज ऑफ साइडवेज ट्रेंड मार्केट में चला जाएगा until unless we see कुछ और मेजर डेवलपमेंट्स आए. ओके, चार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम एक्सपेक्टिंग a very sideways movement unless until 6400 या फिर 6100 MCX पे ब्रेक होता है. ओके, if we'll come towards the fundamental factors, fundamental में देखिए जो अभी recently supply disruption आए थे रशिया से. ओके, एंड that is one of the reason, और ओपेक का जो डिले का बात चल रहा है. ओके, बिकॉज ऑफ ऑल दैट प्राइसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी आई है. ओके, एंड फॉल था दैट हैज स्टॉप्ड. दूसरा चीज यूएस के इन्वेंट्री बढ़ते हैं, दैट इज वन ऑफ द मेजर नेगेटिव न्यूज जो कि प्राइसेस को बढ़ने नहीं दे रहा है. ओके, थर्ड ये जो पी स्टॉक्स चल रहा है, जो नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन, so that is also another factor. अगर कुछ positive news आ जाती है in between, so definitely supply from the Russia will increase और prices में pressure आ जाएगा. but अभी के लिए अगर आप देखेंगे जो भी short term के लिए ट्रेड कर रहे हैं, या तो वो लोग 6400 और 6100 के बीच में ट्रेड करिए. ओके, एंड चाहे तो आप ये जो ट्रायंगल है ये बेचिए कर सकते हैं. ओके, 6400 के ऊपर गए हैं तो आई वुड से जस्ट स्क्वायर ऑफ योर शॉर्ट पोजीशन, जिसका भी शॉर्ट रहेगा यू स्क्वायर इट ऑफ. 6400, right? Yeah, 6400. Okay, cool. Okay, what is impact of tariff? Yeah, there is one on natural gas. Can I hold 360 put option in natural gas tomorrow expiry? Okay, natural gas, see, I just have to check yeah, what is the price now for 360 put, right? 360 put. Okay, 11 रुपए के आसपास है. आई वुड से आप, आई विल गिव यू एन स्टॉप लॉस, उसके साथ ही आप होल्ड कीजिएगा. ओके, बिकॉज 11 रुपए के आसपास है. आई वुड से 7 रुपीज का एक स्टॉप रखिए, उसके हिसाब से होल्ड कीजिए. अगर 7 रुपीज के नीचे चला जाता है देन शुड एग्जिट. और आपके टारगेट मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए तक ही होना चाहिए. ओके, बिकॉज सी ऑप्शन में मैं ये मानता हूं कि जितना जल्दी आप प्रॉफिट बुक करें या फिर यू शुड नो वेयर टू एग्जिट. ओके, सो 7 रुपीज का स्टॉप रख के होल्ड कीजिए. ओके, एंड टारगेट ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए तक का ही आप रखिएगा. Yeah, Meenakshi ji. So 7 rupees, sorry, 5 rupees था ना stop loss? 7 के आसपास, 7 या 6, हाँ 6.5 ऐसा रख सकते हैं. 6.5, 6.9, yeah, 6.5 to 7 as stop loss and maximum up to 15 as profit booking levels. And any trades suggested in natural gas till tomorrow? ठीक है, इसमें तो बहुत ज्यादा volatility जैसा बोल रहे हो. Yes, ज्यादा volatility है तो I would not suggest, because आज inventory numbers भी है, so
मूवमेंट ज्यादा रहेगा। अगर आप वोलेटिलिटी के लिए प्ले करना है तो देखिए प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है, ओके, दैट्स व्हाई इट इज टू रिस्की। ओके, अगर आप स्ट्रेडल का प्रीमियम देखेंगे तो 22 रुपीज है, 22.4, जो कि बहुत ज्यादा है। ओके, सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आपको कुछ करना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रीमियम है, ओके, हाई रिस्की है फिर। Okay, and any suggestion in crude? Any trade suggestion? क्रूड में आई Yeah. थिंक जो स्ट्रेटेजी आई जस्ट रेकमेंडेड, वो स्ट्रेटेजी आप कीजिए, लाइक 6400 और 6100 के, 6400 और 100 का जो ट्रायंगल है वो आप बेच सकते हैं। ओके, तो वो आप चाहे तो वो प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज शाम तक अगर वेट कीजिए, थोड़ा बहुत रिकवरी आती है, लाइक यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर आता है, आप 6400 का एक स्टॉप रख के होगा तो सेल कर सकते हैं, या फिर 6300 या फिर 6200 का एक पुट खरीद सकते हैं, बट स्टॉप प्लस रखिए, बिकॉज आज इन्वेंट्री है और आज इन्वेंट्री जो है वो लेट आएगा। ओके, बिकॉज मंडे वाज हॉलीडे, सो आज लेट, आई थिंक 9:30 या 10 के आसपास है शायद इन्वेंट्री आज जो नंबर्स आएगा। अच्छा, 10:30, राइट? हाँ, 10:30 को है, 10:30 को है, यस, 10:30। Okay. Okay, got it. That was with respect to crude and natural gas. एक query है, I'm long in gold COMEX from 2700. Okay. ठीक है, मतलब कोई query तो नहीं है, someone is just long in gold 2700. Yes. Okay. Okay, what is the impact of tariff? So इंद्रजीत जी, जैसे हम beginning of the session discuss किए थे tariffs का, so primarily impact on gold and silver is that they are supporting the prices. इसलिए तो primarily because of this tariffs, there is this trade war fears, and because of that we are seeing this rally in gold and silver. But also उसके वजह से trade war fears के वजह से economic impact ज्यादा हो सकता है, economic growth slow हो सकता है, because of that crude oil में there is a bearish view. तो उसके वजह से crude oil prices भी थोड़ा कम हो रहे हैं. So there are different impacts on bullion and energy. Bullion के ऊपर it is supporting the tariff situation, but it is weighing down on the energy commodities simultaneously. Okay, I will now get into base metals also. So base metals में what I noticed primarily there is mixed sentiments in base metals. There are different kinds of news impacting. क्योंकि if you look at bullion and energy, primarily US data points, US के news will have a major impact majorly. But for base metals, China से भी आपको major impact रहेगा. Being one of the majorly important economy with respect to base metals. So yeah, so mixed sentiments में अगर इसमें देखेंगे, एक तो टैरिफ्स ऑन ऑटोज एंड सेमीकंडक्टर्स पे जो ट्रम्प ने रिसेंटली दिस वीक व्हाटएवर ही अनाउंस्ड, उसके वजह से अगेन देयर हैज बीन एन इम्पैक्ट ऑन कॉपर प्राइसेस, कॉपर, एल्युमिनियम एंड सच कमोडिटीज, तो थोड़ा नीचे है. बट देयर वाज अ सपोर्ट फ्रॉम द चाइना's डेटा पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द न्यू होम प्राइसेस दैट वी गॉट आउट yesterday. So this gave some support on the prices. But yeah, other than that, there is this talks on, there is this discussion or speculation on US to impose a ban on the Russia's primary aluminium imports, right? So AB talks still right, which will have an impact on the aluminium prices, but yet to get more clarity on this news. So ये some major news है, but yeah, no, over to you. Copper में क्या price level से क्या trade recommendations दे सकते हैं? One second. Meanwhile, कुछ queries like base metals, maybe you can please put in the chat box. We'll try and take it up. Okay, see, copper, I would say जितने भी लाइक लास्ट वीक से जो एक मोमेंटम था, जो रैली था, थोड़ा पॉज हुआ है, एंड इट हैज बीन लाइक 850 से 884 के रेंज में ही है, इफ यू सी फ्रॉम द चार्ट्स। और आप देखेंगे तो 870 के आसपास ही 2-4 दिन से कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है। ओके, एंड ये जो टैरिफ्स का लाइक द न्यू जो भी चल रहा है टैरिफ्स को लेके, एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि कॉपर इंपोर्ट्स पे भी यूएस टैरिफ्स लगाएगा, ओके, जो कि
कुछ अभी तक हुआ नहीं है। ओके, ओनली एज्यूम करके, दैट्स उसको बेसिस पे ही जो कॉमेक्स में कॉपर था उसको ज्यादा, इट हैज मूव्ड अप, ऑलरेडी मूव्ड अप। और ये जो प्रीमियम है कॉपर, कॉमेक्स एंड एलएमई के जो कॉपर है उसमें लगभग हाईएस्ट लेवल पे चला गया था। ओके नाउ, अभी अगर आप 2-4 दिन से देखेंगे तो जो वोलेटिलिटी था दैट हैज स्टॉप्ड। स्टिल फिजिकल का जो टाइटनेस है कॉपर में अभी भी है। ओके, एंड लास्ट, अगर आज का दिन छोड़ेंगे तो जो लास्ट 3 दिन से, 2-3 दिन से थे, एलएमई में कॉपर के थोड़े बहुत स्टॉक्स आए हैं। ओके, जैसे कि एक दिन में कुछ 7% बढ़ा, एक दिन में कुछ 4% बढ़ा, ऐसा कुछ बढ़ के थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है। दैट्स वाई ये जो मोमेंटम है कॉपर में वो टॉप हुआ है। आप देखेंगे ये जो कॉपर एमसीएक्स का चार्ट है, यू कैन सी दैट लास्ट 4 डेज से एक रेंज में ही है, कंसोलिडेशन है, कुछ ब्रेकआउट जैसा नहीं हो रहा है। ओके, बट अभी भी यहाँ पे पीपल आर नॉट रेडी टू लेट इट गो। अगर 860 का लेवल्स अगर मैं देखूंगा, लास्ट 4-5 डेज से होल्ड ही हो रहा है। 860 अगर नहीं ब्रेक होता है तो आपको फिर से 875 या सॉरी 880 के लेवल्स दिखेंगे। अगर 860 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट करेक्शन, बट इफ वी ऐड सम फंडामेंटल्स टू दिस, सो ये वीक में कल फ्राइडे जो है मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आएंगे, मोस्ट जो यूरोप है और यूएस, यूके, सब कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो नंबर है वो आएगा। और जो हमने लास्ट मंथ के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स यूएस के देखे थे बहुत ही अच्छा था। ओके, 2 साल में सबसे अच्छा नंबर आया था, पहली बार 50 के ऊपर आया था। सो दैट इंडिकेट्स के यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, सुधर रही है। दूसरा चीज देखेंगे जो चाइना के हाउसिंग नंबर्स है, अभी भी स्टिल हाउस प्राइसेस में उतना तेजी नहीं, यानी पॉजिटिव नहीं हुआ है, बट जितना खराब था वो, इट हैज बिन लाइक धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी धीरे धीरे यू कैन से दैट इट हैज बीन इम्प्रूविंग इवन चाइना एंड यूएस। सो अगर ये पॉइंट्स को देखेंगे तो अभी के लिए तो जितने भी सारे फंडामेंटल्स देखेंगे दैट इज बीन सपोर्टिव फॉर प्राइसेस। ओनली कुछ ट्रेड के रिलेटेड कुछ आता है तो फिर टैरिफ्स को लेके कुछ आता है तो प्रॉब्लम। आज सुबह भी अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ न्यूज लाइक यूएस प्रेसिडेंट जो है ही हैज सिग्नल के देयर मे बी अ डील, ट्रेड डील बिटवीन यूएस एंड चाइना। ओके, इफ दैट हैपेंस तो पॉजिटिविटी रहेगी, मेटल्स में थोड़ा बहुत और सपोर्ट रहेगा metals में। ओके, सो this is all about, you can say that in all about metals. Yeah. Any recommendation on copper? Sorry, Any recommendation for copper? see, I would say ke I would simply give a buy recommendation, like for 2 to 3 day point of view 860 का स्टॉप रख के एंट्री कीजिएगा, एंड 880 या 884 तक ही टारगेट रखिए। एंट्री लेवल आपका होना चाहिए 867 या फिर यस 867 या 65 के आसपास आप एंट्री लेवल कर सकते हैं। 860 का नीचे का स्टॉप रखिएगा। अगर 860 ब्रेक होता है तो आई वुड से जस्ट exit from your long position. Okay. So there is this copper expiry next week also, I think on Friday. Yeah. Okay. Next, and there is no any queries on base metals as of now. We can also run through aluminum chart once if Okay, possible. just let me see how aluminium. See, I think though ये भी it has also 2 years के highs पे है aluminium, एंड एमसीएक्स में आज तो 265 के लेवल्स भी हिट हो गए हैं। ओके, सो स्टॉक्स तो एलएमई पे अगर कोई कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहेगा एलएमई के इन्वेंट्री तो इट हैज कम डाउन टुवर्ड्स 5 लाख टन के आसपास आ गया है। ओके, पहले समथिंग 10 लाख के आसपास भी था। ओके, धीरे धीरे इट हैज बीन कमिंग डाउन, एंड फ्रॉम द चार्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो यस ब्रेकआउट है, एंड लाइक जैसे ही 255 के ऊपर चला है इट हैज बीन slowly steadily moving up. Okay, and 265 even today hit
मेरे हिसाब से तो अभी भी इसमें है मोमेंटम देखा जाए तो. ओके, एंड second, how far it can go, just let me see. Yes, 255 के लेवल्स जब तक होल्ड रहेगा, ओके, देन वी कैन सी इवन 270 और 275 के आसपास भी हम देख सकते हैं. ओके, फंडामेंटल्स भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जैसे कि जो यूरोपियन यूनियन है, दे आर इवन थिंकिंग टू बैन जो रशियन Russian एल्यूमिनियम, imports. या रशियन इंपोर्ट्स पे दे आर कंसिडरिंग इट. सेकेंड थिंग, चाइना में द स्टॉक्स आर देयर, बट दे बिकॉज ऑफ दे हैव स्टॉक्स ऑलरेडी, उनका जो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्रोल है, इफ दैट कम्स, सो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन भी थोड़ा हिट हो सके. ओके, सो अगर सप्लाई साइड में कुछ प्रॉब्लम्स आती है फ्रॉम चाइना आल्सो, या कुछ रेगुलेशंस आती है, देन आल्सो इट विल बी पॉजिटिव. सो मेरे हिसाब से 255 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है. 255. या राइट नाउ इट इज एट 265, बट ऊपर में आई थिंक 277 के लेवल्स भी हम देख सकते हैं अगर 1-2 महीने का बात करेंगे तो. Okay. या So that was aluminum for you all. ठीक है, just going ahead, और क्या points मैंने note down किया था. So that was with respect to base metals. तो उसके अलावा there are some major important data points expected today. जैसे US initial jobless claims है. So what it actually means, initial jobless claims, जो last 1 week में US में jobless insurance इन्होंने भी claim किया for the first time. So that is the figure. That number will be coming out this week. So this is the weekly data. Every week you will get this initial jobless claims data, and it has a major impact on the dollar prices. So that you can see in the calendar today. So जैसे यहाँ पे है initial jobless claims, and I suggest आप किसी भी economic calendar से open कर लीजिए, and if you know, for example investing.com, if just click and open, what it actually means आपको यहाँ पे mention करेंगे what data it is actually giving and how to read the bullish and bearish numbers. That's one. And यहाँ पे नीचे for the last few weeks क्या levels पे थे ये particular data point, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा. So that is one. And other than that आपको EIA का क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा भी आपको आज आने वाला है. सो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन एट यूएस विल कम आउट with this data every week. The number of the change in the number of millions of crude oil barrels which is available for commercial consumption. तो वो वाला डेटा आपको है, not the exact amount how much is available, but it gives the change, how much withdrawal has happened, और कितना change हुआ है the entire inventory. So that you will get today. So that how much is expected today is, so जैसे अनु भी mention कर रहे थे, it will come at around 10:30 at night today, Indian Standard Time. So it is expected to go up by around 3.2 million barrels, which was 4 million barrels in the last week that we saw. So these are some important data points that you'll have to look at. And also suggest description में नीचे एक link दिया है आपको डाउनलोड करने के लिए, just the key economic indicators. So उसका भी आप link select करके you can go through that PDF. उसमें सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी major economic data points है which will have a major impact on the commodity prices, वो सबका explanation and what they actually mean and how to read those data points आपको एक clarity आ जाएगा. To understanding major economic or key economic indicators both from US and also from India. So आपको different commodity specific या different country से जो भी majorly economic indicators या data points आ रहे हैं, आपको you'll be able to understand from that. Other than that, as I also suggested, commodity yearly report for this calendar year 2025, उसका भी link नीचे description में दिया है. You can click on it and go through the reports. If there are any questions, please put in the chat box. We will try and take it up. Would also suggest other links in the description which are
like how to set up your research recommendations in your mobile app. आपका ICICI Direct का अगर मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो वहाँ पे commodity specific research recommendations आप सिर्फ enable कर सकते हो. So every time Anup or Saif they come up with research recommendations, you immediately get a pop-up notification on your mobile app and you can make your trades accordingly. So I suggest you to go to those videos also, and there are more helpful videos links given for you in the description down below. Anything more you would like to discuss, Anup? Any other specific commodity that you want to mention? No, this week I think see market is frankly totally news or event based since last few days. Even अगर हम last week on week भी देखेंगे तो जो भी न्यूज बेस्ड ही है, सो इट विल बी हाई वॉलेटिलिटी. मैं तो आई वुड रिकमेंड के अगर आप जो भी ट्रेड करते रहेंगे, ओके, स्टॉप लॉस रखिए एंड ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट्स. ओके, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी यू आपको चांस भी मिलेगा. सो ट्राई टू एग्जिट जितना हो सके. डोंट होल्ड, स्टिक विथ योर पोजिशन. ओके, एंड इफ विल सी नेक्स्ट वीक में क्या है, मेरे हिसाब से जीडीपी नंबर्स रहेगा एंड इन्फ्लेशन नंबर्स भी रहेंगे यूएस के. ओके, जो कोर पीसी नंबर्स हैं वो आएंगे एंड मोस्टली मेजरली जो भी रहेगा तो सब टैरिफ्स के ऊपर रहेगा. एंड जो यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उनके तरफ से जो भी एक एक पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, जैसे अभी आज फिर से उनका एक स्पीच था, है ना. सो नेक्स्ट वीक में वो लोग फिर से कुछ टैरिफ्स का डिस्कस करेंगे या कुछ अनाउंस करेंगे. सो अगर जैसे जैसे एक एक चीजें आती जाएंगी आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा. सो मार्केट्स विल बी वोलेटाइल एंड न्यूज बेस्ड. सो मैं तो बोलूंगा कि थोड़े कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा. Right, and tariff news भी I know since the month of January आपको बहुत सारे tariff news आ रहे हैं which are impacting gold, silver, crude specifically, natural gas primarily being driven by the US weather scenario. So for different commodities, I suggest have some major data points. Gold and silver के लिए तो primarily जो tariff news, जो trade war news हो गया, those things. Similarly for crude oil, जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो पीस टॉक्स चल रहे उसके ऊपर ध्यान रखिएगा for crude oil, and also the inventory levels data for crude. And then for natural gas, primarily have a view on this or have a look on this US weather information. That's with respect to energy commodities. And for base metals, there are mixed news, as Anup was also suggesting. Price levels bhi unhone diya hai. So please make sure you do proper trades with proper stop losses and try to book your profits as much as possible and exit soon. Yeah, so since there are no more questions, I think we can conclude here. And stay tuned for next week. We'll again come up with Ask Us Anything session or a different session planned for you, but next Thursday again. Yeah, until then, thank you all for attending the session. Thank you. Thank you, Arvind. Thank you all. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.